Hey guys, welcome back to Mimi's Tasty Kitchen. Today we're going to be making some delicious chicken sesame. This recipe is perfect for a nice lunch or dinner. It's super tasty, so without further ado, let's get on with today's video. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं चिकन सेसमी बना रही हूँ, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। तकरीबन ये 20 पीस चिकन के हैं, 10 पीस पूरे हैं। तो मैंने इसको पहले मैरिनेट किया नमक मिर्च और हल्दी के साथ। आधा घंटा मैरिनेट करके रखा है। उसके बाद मैंने इसको पानी में डाल के इसको बॉयल कर लिया थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए। तो अब इसका पानी ये बॉयल हो गया है। इसको ड्रेन करके फिर दोबारा मैं इसको मैरिनेट करूँगी। So you guys, we just got 20 leg pieces of chicken and we put them to marinate. We put some salt, we put red chili powder, and we put turmeric powder, and then we let that sit to marinate for 30 minutes, and then we put this in water to boil on the stove for 15 to 20 minutes, and now we're gonna drain the water and then we're gonna add some more ingredients. हाँ जी, मैंने चिकन का वो बॉईल कर लिया था, आपको बताया था। तो अब मैंने ये एक प्याली लिया है योगर्ट की दही। So you guys, we just showed you our chicken boiling and we drained that, and now we are getting 1 bowl of yogurt and putting this into it. एक प्याली बेसन की। And now we got 1 bowl of ground flour. एक चम्मच मैंने लिया है नमक का, एक चम्मच रेड चिली रेड मिर्चें, और ये चाट मसाला 1 चम्मच, ये थोड़ी सी हल्दी है आधा चम्मच, और ये सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1 बड़ा टेबल स्पून, ये ज़ीरा है, काली मिर्च है थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून, ये मैंगो पाउडर, और ये चिकन टिक्का मसाला, ये सारा मैंने डाल के। So you guys, we got turmeric powder, coriander powder, cumin seeds, black pepper, salt, red chili powder, mango masala, chicken tikka masala, and chopped masala. And we're just putting this into our dairy and yogurt and red flour. Stirring this around. थोड़ा सा पानी डाल, इसमें थोड़ा सा पानी करके मिक्स। You guys, we just put some water in here and just whisking this around and getting this up here. And we didn't put that much water, we just put like a splash and splash some more in. इसमें ऐड करूँगी चिकन। So we just made this small mixture right here, and now we are going to be adding our chicken into here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मैंने मैरिनेट कर लिया, अब इसमें सेसमी सीड डालेंगे। So you guys, we just added some sesame seeds on here. As you can see, we're just sprinkling them on, and we're just mixing this in with our chicken so that it has more flavor to it. इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। So you guys, we are going to fry these. See you guys then. चलिए मैं देखिए अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। ऊपर मैंने तेल लगा दिया इनको। So you guys, we put our oil
We just heat up for a second. And now we got our chicken and we are putting them on. As you guys can see, they are just frying and we're going to एक तरफ से ये दूसरी तरफ से मैं चेंज करके ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगता क्योंकि ये चिकन तो पहले कुक हो गया होता है ना। मैंने इसको बॉयल कर लिया था तो इसको गला लिया था। अब इसको मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना ये इसके ऑयल ज़्यादा गर्म करके उसके अंदर फ्राई कर देना। तो फिर मैं मिलते हैं डिश करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा। अल्लाह के अल्लाह हाफिज़। You guys, this doesn't take that long. It's a nice recipe and super delicious. So, as you can see, these three are almost done. I'll see you guys when this is all dished out. Alright you guys, this is the final look. This dish looks so great and I can't wait to try it. Be sure to subscribe and comment down below for any questions or recommendations for the dishes you would like us to do next. Follow me on my socials. Thanks for watching, take care, and stay safe. Bye everyone!